Hello everyone, welcome to Word Educational Hub. Myself Aishwarya Saxena, and today in the Core Java Basic series, the series for beginners using NetBeans IDE, I am going to start with the lecture number 11. I have already uploaded 10 lectures in this series and I hope you have watched those videos. In the last lecture, we have discussed this particular code to check the larger between two numbers, and now in today's video, I am going to start with the program for checking multiple of 3. So I am just closing this file. If you haven't watched the previous video, I recommend you to watch the last lecture and come back to this one. Now I am going to create a new file. I am creating a Java class here, and the name of this Java class will be multiple of 3. So we are taking the relevant name because we are going to check a number if it is a multiple of 3 or not. So I'm just creating the file. Now you can see the file has been created and the name is multiple of 3. So now I'm going to take the main method, public static, अब यहाँ पर हम लोग को जैसे कि हमने मेन मेथड ले लिया है. नाउ वी हैव टू सी to take a number if it is a multiple of 3 or not. If we have to check a number if it is a multiple of 3 or not, I'm just taking an integer and अब हम लोग यहाँ पर इसको input कराएंगे. तो system.out.println and println अब हम लोग यहाँ पर इसको मैसेज दे देते हैं enter a number. यूजर को मैसेज आएगा और वो number input कर पाएगा. But to input the number it's required an additional class. So I am just importing import java.util.scanner. स्कैनर क्लास किस तरीके से यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं इसको ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट हियर. और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे और आपको कोई कंफ्यूजन है देन यू जस्ट चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट ऑफ कोर जावा फॉर बिगिनर्स यूजिंग NetBeans. वहां पर हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से स्कैनर क्लास का यूज होता है. सो आप देख सकते हैं यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू pass this object to this particular variable ob.nextInt because we are using integer. यहाँ हम लोगों ने इंटीजर लिया था तो हम लोग यहाँ पर इंटीजर टाइप ले रहे हैं और यहाँ पर हमने इसको स्कैन कराया नेक्स्ट इंट से. ob.nextInt ob जो ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का वो स्कैनर क्लास के एक मेथड नेक्स्ट इंट के थ्रू वैल्यू को स्कैन करेगा जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगी और स्टोर कराएगा राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड असाइनमेंट के थ्रू नम वेरिएबल में. इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट. तो उसके लिए वी हैव टू check if the number modulus 3 equal to 0. It means हमें चेक करना है कि अगर नंबर जो है 3 से डिवाइड होने पर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है it means the number is a multiple of 3. तो यहाँ हम लोग प्रिंट करा लेंगे say num is a multiple of 3. यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करा लिया है. अगर नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होने पर उसका जो आंसर है या रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा इट मींस इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. तो इसे एल्स पोर्शन में जाना चाहिए एंड देन वी विल प्रिंट द नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा. सो लेट्स रन द प्रोग्राम. आई एम सेविंग द फाइल एंड आई एम गोइंग टू रन इट. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर है एंड नाउ लेट्स चेक द एरर. लाइन 9 नेक्स्ट इंट ob.nextInt num system.out.println. So we don't have to give system.in double quotes. That was the error. System.in यहाँ पर without double quotes होना था. And now you can see it's highlighted with in green color. Now I am going to run the file. And you can see the file is okay and it's compiled.
And now enter the number. I am just entering some number. I am giving 77. 77 is not a multiple of 3. Now let's check it again. I am running the file again. And now I am giving the number 50. 15 is a multiple of 3. So you can see the program is running fine. प्रोग्राम का कोड सही है, इसलिए सही रन कर रहा है। इफ और एल्स दोनों ही ब्लॉक हम लोगों ने चेक करके देख लिए हैं। आई होप आपको कोड समझ में आ रहा होगा, आपको प्रोग्राम का कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम लोगों ने ये प्रोग्राम यूजर डिफाइन बनाया है, इसलिए हम लोग यूजर से जितनी बार चाहे उतनी बार अलग वैल्यू को इनपुट करा के चेक कर सकते हैं। अगर ये प्रोग्राम सिस्टम डिफाइंड होता तो हम लोग यहीं पर num की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, एंड वी विल नॉट बी यूजिंग scanner class, but now we are making the programs user defined, so this is the user defined program. Thanks for watching. Stay tuned. See you in the next lecture. Thanks for watching. You can also find many other courses on FameWord Educational Hub. So the courses on C language, C++ language, Java, Java Swing, Advanced Java, CCC, UML, DBMS and Advanced DBMS, Web Designing, PHP, .NET, Android operating system, JavaScript with Node.js, Intermediate Mathematics series, Inorganic Chemistry and many other courses are available on FameWord Educational Hub. So don't forget to check the playlist section because different playlists on different courses are available there. Positively check the playlist section. You can also find FameWord Educational Hub on Facebook and Instagram. You can follow us by the name FameWord Educational Hub on Facebook and Instagram. Thanks for watching. Please like the video, comment your queries and suggestions in the comment box, share the video with your friends and don't forget to subscribe the channel and press the notification bell because after pressing the notification bell, you will start getting some notification of our latest uploads. Also check the description box for FameWord Educational Hub WhatsApp group link because the description box contains the WhatsApp group link of FameWord Educational Hub and you are invited to join the group. Must join. Thanks for watching. Stay tuned. See you in the next video.